हाँ चालू हो गया। नंबर टू नंबर टू मैग्नीट्यूड 10 एंगल 217 degrees. Third magnitude root 2 30 degrees east of north. Number 4 magnitude 10 60 degrees south of west. Number 5 magnitude 4 root 2 south east. सारा करो, I'll discuss them together. Do them all.
अरे नहीं भाई, पॉज वॉज कुछ नहीं है. चलो. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव सॉल्व दिस. आया ना सबको? फर्स्ट क्वेश्चन. Magnitude 520 degrees. Now please follow if you could not do. This is very, very important. So what I do is that I make the XY axis and I make the vector. So this is 120 degrees and the magnitude of the vector is 5. Okay. So this means that I can construct a right angle triangle, right, whose hypotenuse is 5 and this angle is 60 degrees. If this angle is 60 degrees and the hypotenuse is 5, then using cosine 60 degrees, cosine 60 degrees is equal to, cosine 60 degrees is equal to, is equal to base upon hypotenuse. I get base is equal to 5 cosine 60 degrees and cosine 60 degrees is 5 by 2 and this should be this side if you want, दोनों same side होने हैं, rectangle है, so this should be 5 sine 60 degrees which is equal to 5 root 3 by 2, right? And now it's very easy to write the vector 5 by 2 minus I cap plus 5 root 3 by 2 j cap. ये सबको समझ में आ रहा है? Anybody not understanding, please type no. Anybody not understanding, please type no. Anybody not understanding, please type no. Okay. Second vector. Magnitude 10, 217 degrees. X and Y components निकालना. Yes. 5 root 3 by 2. मैंने उसकी वैल्यू लिखी. 5 root 3 by 2. ठीक है? तो ये वाला वेक्टर ड्रॉ करने के लिए, ये वाले वेक्टर के लिए फर्स्ट आई विल मेक इट मैग्नीट्यूड 10, 217 डिग्री. So this should be in the third quadrant, right? Magnitude 10 and this angle is 217 degrees, right? So again, I have two choices. I can simply write that the vector is 10 cosine 217 degrees plus 10 sine 217 degrees. That will give me the answer directly. Okay. Or I can say that look, this angle is 37 degrees, 180 minus कर दूंगा 217 से, and this vector is having a magnitude of 10. Therefore, the components of the vector will be this and this, right? And again, using the concept of cosine 37 degrees will be equal to base upon hypotenuse. So base will be equal to 10 cosine 37 degrees, which will be equal to 10 into cosine 37 degrees is 4 upon 5. So this will be equal to 8. Right? Similarly,
sine 37 degrees is equal to opposite over hypotenuse. So opposite is equal to 10 sine 37 degrees, 3 by 5. This should be 6. Right? Then the vector either from here directly or from this analysis, you get minus 8 I cap minus 6 j cap. ठीक है ना? Remember that this direction is minus I cap and this direction is minus j cap. हाँ भाई, एक मिनट तो हाँ तो cos 37 डिग्री 3/5 होता है। नहीं बेटा, cos 37 4/5 होता है ना। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर मेरे पास 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो 3 के ऑपोजिट साइड वाला एंगल 37 होएगा, क्योंकि ये छोटा साइड है ना, और ये 53, 4 के ऑपोजिट वाला 53 होएगा। सो कोसाइन 37 will be equal to 4/5 and sine 37 will be equal to 3/5. ठीक है? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं, ये तो अपन ने किया हुआ है ना, ये डन दिस ऑलरेडी। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे जाओ ना। क्या कर प्रीवियस स्लाइड पे? एक चीज चेक करनी थी सर। क्यों नहीं लिया तुमने? इससे पहले वाली सर। अबे इससे बहुत सारी है, प्रीवियस बोल रहा है। फर्स्ट सम, हाँ यही वाला सर। हाँ हो गया सर, थैंक यू। अब मैग्नीट्यूड √3 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब हुआ? ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब हुआ ये। राइट? मैग्नीट्यूड कितना दिया है? √3. So this length is √3. I can easily find the components of the vector. Cosine 30 degrees is equal to base upon √3. Base is equal to √3 cosine 30 degrees. Is equal to how much? 3/2. ये डिस्टेंस 3/2 हो जाएगी। रिमेम्बर बेस अब वर्टिकल साइड है ना, उसी तरह से साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू द ऑपोजिट साइड बाय √3. So the opposite side we get √3 sine 30 degrees, which is equal to √3/2. So this distance is equal to √3/2. Therefore, the red arrow on the x-axis is also √3/2. So the answer to this question is √3/2 I cap plus 3/2 j cap. अभी आ रहा है समझ में? If you could not do magnitude 10, 60 degrees south of west. So let's draw north
west, east, south. 60 degrees साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब हुआ कि ये एंगल 60 डिग्री है। वेस्ट से शुरू करके साउथ की तरफ जाने पे 60 डिग्रीज, ठीक है ना। अरे आज मैंने सारे स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर लिए हैं, मैं अभी भेज भी दूंगा। अभी मैं वापस जाता हूं दूसरे स्लाइड पे, पहले ये तो करने दे मेरे को। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 10. Components of this vector would be this and this. So we get cosine 60 degrees is equal to base upon hypotenuse. Base is equal to then 10 cosine 60 degrees is equal to 5. ये 5 लेंथ का वेक्टर हो गया। तो इसी तरीके से sin 60 degrees is equal to opposite over 10. So the opposite side is 10 sin 60 degrees, which is equal to 5 root 3. So this is equal to 5 root 3. So the vector is minus 5 I cap minus 5 root 3 j cap. ठीक है ना, ये वेक्टर हो गया। And I leave the last one. तीनों वाले पे भी आते हैं, बट थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। तीनों वाले पे अभी आते हैं। Last one, I'll leave it to you. I hope now, at least in 2 dimensions, if I give a vector in I cap j cap form, then you should be able to convert it to magnitude and angle. और लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला ही तो है ये। लास्ट वाला कौन सा था? ये था। So you should be able to convert any I cap j cap vector into magnitude and direction, and you should be able to convert any vector जिसका magnitude और direction given है into the I cap j cap vector. ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। We are moving ahead. So what is the use of I cap j cap form? ये हमने एक्टिविटी करी क्यों? इसका क्या रिक्वायरमेंट है? Supposing that we have the x-axis, the y-axis, और यहां पे हमारे पास एक वेक्टर है which is something like this. Okay, so this vector is 3 I cap plus j cap. 3 I cap plus j cap मतलब हुआ कि ये जो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है ये 3 होना चाहिए और यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है ये 1 होना चाहिए। ठीक है ना? और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, राइट? एंड द सेकेंड वेक्टर समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज 2 I cap plus 2 j cap. इसका मतलब कि ये 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए।
ये आ रहा है ना सबको समझ में? मैंने दो वेक्टर बनाए हैं, पहला वेक्टर है 3i cap plus j cap, इसका मतलब it should be a vector which is drawn from the origin to the point having coordinates 3, 1, और अगर मैंने वेक्टर बनाया 2i cap plus 2j cap, it must be a vector starting from the origin and going to the coordinates 2, 2. Now I want to add these two vectors, and when I add these two vectors, I know parallelogram law, they are already drawn together. So I complete the parallelogram and I draw the resultant vector. And now something very weird happens. If I were drawing this on a real graph paper, then I would get this as 5, and you can try it on a real graph paper. And I will get this as 3. So what is a red vector? The red vector is 5i cap plus 3j cap. This is not very surprising actually, because the blue vector had an x component of 3, the green vector had an x component of 2, and these two components are in the same direction. So when they add up, they simply add up like arithmetic. 2 plus 3 is equal to 5. So basically what has happened is that I have reduced the algebraic operation, I have reduced the vector operation of addition to a very, very familiar form, right? मैंने क्या किया कि दो वेक्टर्स को ऐड किया, पैरेललोग्राम लॉ ही लगाया है मैंने, है ना? मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगाया है अपने हिसाब से, जैसे आप लगाते हैं, जैसे हमने सीखा है। लेकिन जब मैं आई कैप जे कैप में वेक्टर्स को लिख रहा हूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो वेक्टर एडिशन हुआ है, इसके बाद जो सम आया है वेक्टर्स का, that is simply the sum, the actual arithmetic sum of the two vectors, right? 3 plus 2 5 है, 3i cap plus 2i cap 5i cap है, 1 plus 2 3 होता है, तो j cap plus 2j cap is equal to 3j cap. So I have reduced the process of addition of vectors into a very familiar form of arithmetic addition. The only difference between this and the maths वाला addition is कि maths में केवल दो नंबर होते हैं जिनको आप ऐड कर देते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग नंबर हैं जिनको आपको ऐड करना। आई कैप अलग से ऐड होएगा, जे कैप अलग से ऐड होएगा, एंड ऑब्वियसली अगर के कैप आएगा तो वो अलग से ऐड, राइट? इज दिस अंडरस्टूड? सो व्हाट वुड हैपन? What would, finally, yes, absolutely. So what would happen if I gave you 10 vectors to add? Okay, if I gave you 10 vectors to add, हाँ ईश्वरजोत, बिल्कुल जैसे simultaneous equations करते थे, लेकिन यहाँ equation नहीं है, यहाँ पे x और y की जगह i cap j cap है, behavior बिल्कुल same रहेगा। हाँ, addition like in algebra, yes. So what would happen if I gave you 10 vectors to add? अब अगर आप पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि पहले दो वेक्टर का पैरेललोग्राम बनाओगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका तीसरे के साथ बनाओगे, ऐसे करते करते कचड़ा हो जाएगा कॉपी में। अगर आपने पॉलीगन लॉ भी यूज किया तो भी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल, रूलर, ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। बट इफ यू reduce the 10 vectors to I cap j cap form, then all you have to do is write all the vectors in a vertical line and simply add up the vectors just like you would add up numbers, right? Okay. और ये जो इंडिविजुअल ब्लू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकालना आता है। जो इंडिविजुअल ग्रीन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना आपको आता है।
और ये जो इंडिविजुअल रेड वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको निकालना आता है, राइट? I am going to go to the next slide where I want to write this in a formal way. Okay. So what we do now is we say that if we have a vector A which is equal to AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap, okay, and if we have a vector B which is equal to BXI cap plus BYJ cap plus BZK cap, where AX, AY, AZ, BX, BY, BZ are 6 numbers. Okay, they can be positive numbers, they can be negative numbers. Then the vector A plus B is equal to AX plus BX I cap plus AY plus BY J cap plus AZ plus BZ K cap. Okay, not only vector addition, but vector subtraction has become very easy now, because A minus B will be equal to AX minus BX I cap plus AY minus BY J cap plus AZ minus BZ K cap. Right? So now there should be no problems if I give you vectors to add or subtract. You can, of course, you are free to use parallelogram law still, and sometimes visually it is better to do. But most of the time it is better to resolve the vector into its components and add them. Okay, right? Next is vectors in 3 dimensions. तो इसमें मैं बता देता हूं कि हमें एक सेकंड just 2 minutes, okay, just 2 minutes. 2 minutes, wait for me. I'll K cap height is 2 minutes, wait for me. Yeah, तो मेरा कनेक्शन बहुत गड़बड़ हो रहा है आज. So vectors in 3 dimensions, there are 2 things I want to discuss here. One is very important, we'll be using it regularly. The other is not so important, okay, and I don't think we'll ever use it in physics, but
it is within your syllabus in the sense that this topic of vectors will be taught to you again in class 12th in mathematics, and in mathematics they will go into depth of this topic, right? So I want to show you how vectors in 3 dimensions work. Whenever you think of 3 dimensions, abhi somebody was saying k cap means up. Well, k cap can mean up. It is not necessary that k cap is the meaning of k cap is up. So I will try to draw the vector in 3 dimensions, right? So these are the 3 mutually perpendicular axes. This is the x axis, this is the y axis, this is the z axis, right? The vector that I am interested in is this. Okay, this is a 3-dimensional vector, although abhi ye dikhai aisa nahi de raha hai. But hopefully after I draw this cuboid sort of a shape, then it should be clear that this vector is along all the 3 axes. Right? ये cuboid shape समझ में आ रहा है? ये cuboid shape के 3 sides जो हैं वो actually XYZ axis ही है. ये 3 side हैं पीछे वाले और ये cuboid पूरा समझ में आ रहा है. I hope सबको. So let me start naming the vertices. Yes, the blue vector is the diagonal of the cuboid. So let me start naming the vertices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the vector is drawn from where to where? The vector is drawn from which vertex to which vertex? The vector is drawn from which vertex to which vertex? It is drawn from 1 to 7. Right? So the vector is drawn from 1 to 7. ठीक है? Right? इतना I hope सबको visualize हो रहा है. The vector has been drawn from the vertex 1 to the vertex 7. Okay. The plane 1, 2, 3, 4 is the XY plane. Yes? Understand what I'm saying? The plane 1, 2, 3, 4 is the XY plane. आ रहा है समझ में? The plane 1, 2, 3, 4 is the XY plane. The plane 1, 2, 6, 5 is the XZ plane. The plane 1, 2, 6, 5 is the XZ plane. Yes? ये आ रहा है समझ में जो मैंने बोला? 1, 2, 3, 4 if you look very carefully is the XY plane. If you look at 1, 2, 6, 5, ठीक है? Then this is the XZ plane. And if you look at 1, 4, 8, 5, then this is called the YZ plane. ठीक है? ओके, अगर हम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट की बात करना, although it is a very crude and unscientific way of talking about languages, and slowly you should be getting away from it. Slowly you should be getting used to the fact that we'll talk about directions in ICAP, JCAP and KCAP form. But in this diagram, if you wish, then the direction 1, 2 is east. The direction 5, 1 is north.
the direction 1, 5 is south, the direction 2, 1 is west, the direction 1, 4 is up, the direction 4, 1 is down. अगर आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में काम करना चाहते हो तो इस केस में जो z एक्सिस है वो हमारा नॉर्थ साउथ बन गया, जो x एक्सिस है वो ईस्ट वेस्ट बन गया, और जो y एक्सिस है वो अप डाउन हो गया. ओके, नाउ if I tell you, okay, if I tell you, I'm telling you this, that the length 1, 2 is equal to x, the length 2, 3 or the length 1, 4 is equal to y, and the length 1, 5 is equal to z, right? So this means that this length is x, this length is z, this length is y. Okay. So if the length 1, 2 is x, the length 1, 4 is y, and the length 1, 5 is z, then what is length 1, 7? What should be length 1, 7? 1, 7, of course, being the length of the blue vector. Area of the diagonal? ये तो मैंने नया चीज देखा. Area of the diagonal? हाँ, diagonal, हाँ, वो तो समझ में आ गया था, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ. तो if you remember, the length of the diagonal is, ये Pythagoras theorem से आ रहा है. This is Pythagoras in 3 dimensions. So this will be under root of x square plus y square plus z square. ठीक है? Okay. ये सारी चीजें अभी मैं लिखूंगा. ओके, मैं इन सारी चीजों को अभी मैं फॉर्मली आपको लिख के दिखा दूंगा. नाउ वी कम टू अ वेरी ट्रिकी, हाँ, रूट एक्स प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रूट. ये मैग्नीट्यूड होएगा इस वेक्टर का. ये मैं अभी लिख के दिखा दूंगा. ये इजी है, याद रखना. ये पाइथागोरस थ्योरम है सिर्फ 3 डायमेंशंस में. जो ट्रिकी पार्ट है और जो हम यूज नहीं करेंगे, अब वो मैं बताता हूं. सो द ट्रिकी पार्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 separate questions. Okay, the tricky part is consisting of 3 separate questions. Okay, first question. Yes. First question. If the angle between the x-axis and the vector is alpha, okay, please listen to my question. If the angle between the x-axis and the vector, that means the angle between 1, 2 and 1, 7 is alpha, right? Then please tell me the 3 sides of the right angle triangle in which this alpha will exist. Okay? Please listen to the question very carefully. If the angle between the x-axis and the vector is alpha, then what are the 3 sides of the right angle triangle in which this alpha exists? नहीं, मेरे को तो 3 नंबर चाहिए ना. अब जैसे मेरे पास एक आंसर आया 1, 2, 3, right, which is wrong. Because 1, 2, 3 is a right angle triangle. Yes, it is a right angle triangle. लेकिन हमने तो जो अल्फा एंगल लिया है वो तो एक्स एक्सिस और ब्लू लाइन के बीच में लिया है. और ये जो ब्लू लाइन है ये 7 के थ्रू पास करती है. You can't have a right angle triangle in which the third vertex है ही नहीं उसमें.
फिर दूसरा आंसर मुझे आ रहा है 176. ओके, 176 अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें एक्स एक्सिस नहीं आएगा, उसमें एक्स एक्सिस नहीं आएगा. या so the correct answer is many people are giving the correct answer. Very nice, very good. Correct answer is 172. Okay, very difficult to see. The correct answer is 172. And the third side of the right angle triangle that I am talking about is here. ये रहा right angle triangle. लेकिन यहाँ right angle कहाँ है? ये कौन बताएगा? हाँ, मेरा कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार. Where is the right angle? So in the triangle 172, कौन सा एंगल राइट एंगल है? कौन सा एंगल राइट एंगल है? वेरी नाइस. एक सही आंसर आया है मेरे पास. 2 सही आंसर आ गया, 3 4 आ गया. कोई नहीं गलत आंसर है. देयर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल हियर. या 3 तो है ही नहीं ना बेटा, 3 तो साइड ही नहीं है ना. 172 ट्राइंगल में 3 कहां से आ गया है? So the right angle is here. The right angle is here. मुझे टेढ़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन ये है राइट एंगल. So the right angle is angle 2. Okay, or 127. 127 or 721. That is the right angle. Now you may ask, अरे ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? How is this possible? तो जो 72 लाइन है, वही तो बता रहा हूं, सुनेगा तब ना. जो 72 लाइन है, अरे मेरी बात सुनो भाई. 72 जो लाइन है वो किस प्लेन में लाई करती है? Look at the planes that I have drawn. The line 72 lies in which plane? The line 72 lies in which plane? प्लेन के लिए 2 लेटर्स चाहिए होते हैं, एक लेटर से प्लेन नहीं डिफाइन होता है. YA कहां से आ गया? Line 72 lies in which plane? The line 72 lies in which plane? The line 72 lies, Yash कौन सा प्लेन? 6273 or the YZ plane, right? YZ plane. XY plane में नहीं है बेटा. Line 72 is not in the XY plane. Line 72 lies in the YZ plane. And by definition, the angle between the YZ plane and the x-axis must be how much? The angle between the YZ plane and the x-axis must be how much? Must be 90 degrees. Right? The angle between the XY plane and the Z-axis must be how much? 90 degrees. The angle between the XZ plane and Y-axis should be how much? 90 degrees. Right? यही तो मतलब होता है 3-dimensional coordinate axis का. So because this all are mutually perpendicular, yes. So because this line 7-2 is in the YZ plane, therefore by definition, the angle between this line and the x-axis should be 90 degrees, which unfortunately is not obvious in this diagram. Okay, I'm sorry about that. But if you take your book and if you make a cuboid, okay, using I don't know क्या use करके बनाओगे, but if you make a cuboid, then you will find that the diagonal of one side of the cuboid is definitely perpendicular to the third side of the cuboid. Book itself is a cuboid. हाँ. तो अगर आप
बुक के साइड में एक डायगोनल बनाओगे तो बुक का जो लेंथ है इस डायगोनल से परपेंडिकुलर रहेगा. Okay. So in this right angle triangle 172, okay, in this right angle triangle 172, what is the value of cosine alpha? 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 It is 1, 2 upon 1, 7. Absolutely right. But what is 1, 2? What is 1, 2? 1, 2 is x. Yes, cosine alpha is equal to 1, 2 by 1, 7. But 1, 2 is equal to x. And what is 1, 7? 1, 7 तो वेक्टर ही है. 1, 7 must be the magnitude of the vector itself, right? 1, 7 must be the magnitude of the vector itself. So cosine alpha is equal to the x component upon magnitude of the vector itself. Okay. Now I'm going to change the slide, but before I change the slide, I am going to write down, or I'm going to show you the angle between y-axis and the vector. It is beta. Okay, so where is the right angle triangle for which beta is an angle? Where is the right angle triangle for which beta is an angle? नहीं 7 तो होना ही चाहिए ना, उसमें 1 और 7 तो होना ही चाहिए. आपको तो थर्ड साइड डिसाइड करना है सिर्फ. 1 और 7 तो होना ही चाहिए. तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, 178 होएगा या 174 होएगा. अब because the angle beta is between the y-axis and the vector, इसका मतलब 0.4 भी होना चाहिए उसमें. 174, that is the right angle triangle. तो ये लाइन जो है, ये लाइन, ये वाला जो 174. So what do you think will be the value of cosine beta? Cosine alpha is x upon mod of a, right? Cosine beta will be equal to then what? Y upon mod of a. And cosine gamma, which is the angle between the z-axis and the vector, should be equal to z upon mod of a. But what is mod of a? We have already decided what is mod of a. Mod of a is under root of x square plus y square plus z square. So this is equal to y upon under root of x square plus y square plus z square. This is equal to z upon under root of x square plus y square plus z square. Right? So therefore I end up with a very nice relationship